Good morning, students. I am your English teacher Shabana. Yes, students, this is your story. How clever! I have taught you 3 pages of this story yesterday. Now we will read page number 45 of this chapter. In the last video, I have taught you about Tenali Raman and Krishna Deva Rai. In that video, I have taught you about Krishna Deva Rai, who was the emperor of Vijayanagaram. He knew that all the courtiers were jealous from Tenali Raman. Why? Because Tenali Raman was the most intelligent person in the court and he was famous for his cleverness. That's why Durbuddhisaran, Minister Durbuddhisaran did not like him. So students, in the last video, the king Krishna Deva Rai decided that to give the chance each courtier a chance to prove his cleverness. The king decided that he will give the chance to prove his cleverness. So he said to the courtiers to make a yard of smoke from the burning incense sticks. But the courtiers were shocked because they did not know how to make the yard with smoke. But Tenali Raman was surprised and he was happy on that time because he knew how to make the yard of smoke. Now students, we will read page number 45. Yes students, here is a graphic number 10. Durbuddhi walked up to the incense stick and looked at them and thought to himself. Tenali Raman sat with his eyes shut. Durbuddhisaran walked up to the incense sticks. Durbuddhisaran इंसेंस स्टिक्स के पास जाता है एंड लुक्ड एट देम और उनको देखता है एंड थॉट टू हिमसेल्फ और अपने आप ही सोचता है तेनाली रमन सैट विद हिज आइज शट. नाउ दुर्बुद्धिसरन थॉट व्हाट ही थॉट, इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक, क्या ये किसी तरह का मजाक है? बट आई विल हैव टू डू दिस, लेकिन मैं इसे करूँगा. ओके बट हाउ डू आई डू इट, कि मैं इसे कैसे करूँ, लेकिन मैं इसे कैसे करूँ. इन द नेक्स्ट ग्राफिक, दुर्बुद्धि वॉज अनेबल टू फाइंड अ वे ऑफ ब्रिंगिंग अ यार्ड ऑफ स्मोक. दुर्बुद्धि स्मोक का यार्ड लाने में बिल्कुल असफल रहा. उसे बिल्कुल भी एबल नहीं था कि वो किस तरह से स्मोक का धुएं का यार्ड बना सके. While the king looked on amused, some courtiers were shocked. As you know students, Durbuddhi was unable to find a way of bringing a yard of smoke, and while the king looked on amused, some courtiers were shocked. दुर्बुद्धि बिल्कुल ही असफल रहा. उसको पता ही नहीं चला कि कैसे धुएं का यार्ड बनाया जा सकता है, स्मोक का यार्ड बनाया जा सकता है. While the king, जबकि king looked on amused, वो पूरे अमेजमेंट में देख रहे थे. देखा उन्होंने. some courtiers were shocked, और जो बाकी courtiers थे वो सारे shocked थे. In the 12th graphic, seeing Durbuddhi unable to do the work, the king opened the competition for all except Tenali Raman. दुर्बुद्धिसरन को काम में बिल्कुल इस कंपटीशन में असफल होता हुआ देखकर, अनेबल होता हुआ देखकर द किंग कृष्ण देवा राय
किंग कृष्णदेवराय ने कंपटीशन सबके लिए खोल दिया एक्सेप्ट तेनालीरामन। तेनालीरामन को छोड़ के बाकी सबके लिए कंपटीशन खोल दिया गया। द किंग कृष्णदेवराय said, I want all my ministers to try, so please. I want all my ministers to try, so please. The king कृष्णदेवराय said, मैं अपने सारे मिनिस्टर्स को ट्राई करने के उनका ट्राई देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब ट्राई करें, सो प्लीज़। एंड द other courtiers said, it is impossible your highness, it is not possible, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है your highness. In the 30th graphic, seeing Durbuddhi and the other ministers unable to do the work, दुर्बुद्धि एंड अदर मिनिस्टर्स को काम में कंपटीशन में यार्ड ऑफ स्मोक बनाने में अनेबल देखकर द किंग ओपन द कंपटीशन फॉर तेनालीरामन। किंग ने तेनालीरामन के लिए भी कंपटीशन ओपन कर दिया। एट फर्स्ट किंग कृष्णदेवराय said Tenali will not take part of this competition, and when he see that no one can make the yard of smoke, then he opened the competition for Tenali also. Then the king Krishnadevaraya said, what? No one could do this. कोई भी नहीं कर सकता. Tenali, why don't you try? Tenali, तुम क्यों नहीं ट्राई करते? Tenali said, with pleasure, your highness. And then he tried to make smoke of yard. Yes, students, did you know about Tenali Raman? Tenali Raman was a famous courtier in earlier days in the court of Krishnadevaraya, the king of Vijayanagaram, and he was able to make the yard of smoke on that time because he was the most intelligent person in that state of Krishnadevaraya. Yes, students, now we will turn the page and open the page number 46. In 40th graphic, happy to get a chance. Who? Tenali Raman. Tenali Raman, happy to get a chance, called his attendant and said something in his ear. चांस मिलने के बाद तेनालीरामन बहुत खुश हुआ और उसके अटेंडेंट ने बुलाया एंड सेड समथिंग इन हिज ईयर, और उसने अपने अटेंडेंट को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा. द अटेंडेंट केम बैक with a yard long bamboo, a piece of jute string and a banana leaf, and gave them to Tenali. The attendant of Tenali Raman came back with a yard long bamboo. एक लंबा सा यार्ड बैम्बू लेकर वो वहाँ पर वापस आया. A piece of jute string, जूट की रस्सी लेकर, and a banana leaf, और एक बनाना लीफ लेकर वहाँ पर वो वापस आया. एंड गेव दैम टू तेनाली, और ये सब कुछ उसने तेनाली रामन को दे दिया. देन 16th graphic, तेनाली कवर्ड वन एंड ऑफ द बैम्बू विद वन हाफ ऑफ द बनाना लीफ. तेनाली रामन ने एक बैम्बू का एक साइड तेनाली कवर्ड वन एंड ऑफ द बैम्बू विद वन हाफ ऑफ द बनाना लीफ से कवर्ड कर दिया. देन 70th, everyone wondered how Tenali Raman would handle this impossible task. Tenali let the smoke of the incense sticks fill the hollow bamboo. उसने क्या किया? सभी जितने भी कॉर्टियर्स थे, सभी के सभी सारे वॉन्डर्ड थे that how could it possible, how Tenali Raman would handle this impossible task.
Tenali Raman let the smoke of the incense sticks fill the hollow bamboo. You all know about the bamboo. Yes, students. Bamboo is a hollow thing. बीच से खोखला होता है bamboo. And उसने क्या किया, उसने bamboo को इंसेंस स्टिक के आगे रखा और उसका जो स्मोक था वो उसके अंदर जाने लगा, उसको वो स्मोक से फिल करने लगा. In 80th graphic, then he sealed the other open end of the bamboo with the remaining half of the banana leaf and smiled. फिर उसने क्या किया, he sealed the other open end of the bamboo with the remaining half of the banana leaf and smiled. उसने जो एक तरफ का जो उसका बैम्बू खुला हुआ था उसको कवर किया, रिमेनिंग हाफ को कवर किया बनाना लीफ से और मुस्कुराया. Then Tenali presented the bamboo to the king. Then Tenali Raman ने बैम्बू को filled smoke से filled बैम्बू को king को present किया. Here your highness 1 yard of smoke. Here your highness 1 yard of smoke. And Tenali Raman said, Your highness, here is the yard of smoke in bamboo. Yes, students, he filled the bamboo with the smoke from incense sticks and make the yard of smoke. How clever, na? Yes, Tenali Raman was a clever man on that time. And the King Krishnadeva Rai rewarded him for the winning of this competition, and all the courtiers were amused on that time, were surprised of this thing of Tenali Raman. Yes, students. Now, students, you have to do Let's Try One of this chapter. In Let's Try One, you have to take the correct answer. Bye-bye, students, and take care yourself.